Okay, so if you are someone who has got MacBook on a student offer and you also got AirPods, then if you are wondering that how to connect and कौन से features अपन को MacBook access करने देगा, like can we use ANC, transparency, adaptive mode and noise cancellation and all. I will tell you how to connect with MacBook and also which are the features that we can access with AirPods. So this is my AirPods Pro 2 and it has my name. Now if I open it, now I have to press this button. If you got AirPods 4, then what you have to do is there is a button invisible here. Just click it, hold it for some time, and when this light blinks, what you have to do is you have to go to your settings, Bluetooth setting. uh, okay, so we can see AirPods Pro 2 and we have connected. we it is saying key respond to Siri by moving your head when wearing headphone. Okay, so इसके अंदर एक और फीचर है कि मतलब अपन ना या हाँ बोल सकते हैं कॉल उठाने या ना उठाने के लिए, तो इट विल कट कॉल ऑटोमेटिकली वट एवर वी से। तो एक चीज़ अगर आपको दिख रही है कि यहाँ पर मैं अपने केस की बैटरी देख सकता हूँ एंड ऑल्सो आई कैन सी दोनों बड्स का जितना परसेंटेज है वो भी मैं देख सकता हूँ। अगर आपको इसके फीचर्स देखने हैं तो वी कैन गो एंड we can go to AirPods Pro setting and here you can check. First let's go one by one. You can change your device name, you can change noise cancellation, transparency, adaptive mode, you can change your press and hold controls, you can change this also. Actually adaptive mode AirPods 4 में भी होगा, so you can check once. Now बाकी सारी सेटिंग्स भी अपन को ये प्रोवाइड करता है। कन्वर्सेशन अवेयरनेस, सो व्हाट दिस डज, इसमें अपने को अगर कोई अपन से बात कर रहा है या अपन किसी से बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आवाज़ थोड़ी सी वॉट एवर म्यूज़िक इट इज़ प्लेइंग वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अडेप्टिव ऑडियो, तो ये तुम डिसाइड कर सकते हो कितनी नॉइज़ तुम्हें रिड्यूस करनी है, लेस नॉइज़ या फिर बहुत नॉइज़। automatic ear detection, this is fine. Microphone, automatically switch earpods, always left earpod. Okay, so दोनों दोनों में माइक्रोफोन है, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो दैट इज़ फाइन। एंड हेड जेस्चर मैंने कर रखा है जैसे कि अभी सीरी का बोला था। यू कैन कस्टमाइज एवरीथिंग, सो यू कैन ऑल्सो कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम हियर, like sorry here it shows our AirPods here, and you can control sound, you can control speakers. It's great, right? You can check this transparency, adaptive noise cancellation, you can change this also. Spatial audio, it is there, but I don't know why it is not showing. Maybe I have to do something maybe in the setting. And yeah, that's all I think for the AirPods. If you have any question, please let me know, and if you want anything else, please let me know. Thank you. I hope you enjoyed.